Okay, so what should be your strategy on the D-Day of XAT 2019? So before I move ahead, I want to give you guys a quick advice is that this is going to be the last but the most important exam of the season if I look at after CAT, right? So there are a lot of IMs which will definitely not be accepted in XAT, but except IMs, right? All the non-IMs college, like which are pretty good ones, like Goa Institute of Management, then SP Jains and KJ Som and all that, right? These guys are definitely going to be accepting your XAT score. So yes, you got to be very careful and you got to be really, bang on as far as XAT 2019 is concerned. So you cannot take any other chance because you got screwed in CAT because of Quants or X Factor or Snap. As far as Snap is concerned, people were not really happy with Snap because it came to be like an easy exam, so cutoffs are going to go up. But again, it's only for the symbiosis. But if you look at non-IMs, XAT is going to play the most important role. And what happens as far as XAT is concerned, the good thing about XAT is it's around about 10 to 12 percentile minus. So if there is a college which asks you for like round about 90 percentile as a cutoff via CAT, the same college via XAT will be asking you around about 78 to 80 percentile. So again, as far as the scoring is concerned, kind of this bracket 80 percentile plus, this exam is a little bit easy to kind of score more, and that's how you can get a call from the college, and then you can play very much hard on your strengths, which is like work eggs or smartness and blah 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 and stuff, right? So this is going to be the most important exam of the season. Okay, now 74 questions in total with 165 minutes in your hand. So as far as the exam is concerned, the first thing that I want to tell you is that you have ample of time. So there is no shortage of time at all. And trust me, I'm not going to tell you how much time you'll be spending on which all the section. I think that's really cliche, and that's one of the fuck all thing that I really don't want to do what others are doing. I see other mentors, they tell you that, go for like 50 minutes to VA, give, say 60 minutes to decision making. I don't really understand that. I've seen a couple of websites also making, kind of claiming that thing. But guys, trust me, I'm really not going to put my hands into that kind of shit because this is fucking unrealistic. It doesn't work these days, right? Because the exams are so bloody dynamic, until and unless the exam gives you its own kind of time limit, you have to follow like what CAT did, right? But for these exams, I don't think you even have to kind of, time yourself up. I'm going to go and give 40 minutes to VA or, 50 minutes to decision making. What if you're not able to solve anything from decision making? What the fuck you going to do for those 50 minutes, right? So guys, trust me, the world has changed. The dynamics of the exams have changed. So, people are still living in, I think, 2010 or 11 era, and they're not able to understand. So, my take is, you are actually free, as far as the time limit are concerned. Give time to particular section as per your, choice. Like, you want to put like 70 minutes on a section, do that. 30 minutes on a section, do that. So, I leave that up to you because there is no section limit as far as this exam is concerned. So, time management, you take care of it. Again, now, if you look at 60 questions that if you plan to attempt, right, on 74, 60, I think it's a very positive. I think I'm over positive. But even if you look at 60, questions, 165 minutes, you can have around about 2.75 minutes per question. It's a good deal, guys. But again, 60 is a very exhaustive number. I would say it's not going to be really possible to attempt those many questions. So yeah, one thing that you have, one relaxation that you have is you have a good time. So take a deep breath. Relax yourself and, move ahead with your exam. Point number 2, as far as the selection of your section is concerned, again, as far as selection is concerned, this is going to play the most important role, and I want you guys to be really careful about selection of your section first. Now, my advice to you guys is that don't put your hands into decision making when you start, because this is not going to be the section which is going to be really fruitful for you. So you have to be a little bit conservative. And trust me, as far as XAT is concerned, XAT में ज़्यादा दिमाग ऊपर करके नहीं जाना है आपको. XAT में थोड़ा एकदम low level, keep it a little low profile, have a good confidence, go एकदम गरीब attitude से आपको चलना है. You cannot just say that I'm gonna go and fortify the exam. ज़्यादा टशन में आपको नहीं जाना है XAT में. अगर आपका ऐसा attitude होगा तो आपको वो help करेगा. Be motivated, be confident, don't be overconfident, right? तो पहला चीज है decision making, avoid. दूसरी चीज है data interpretation, avoid. Now you have two choices. The choices are verbal ability. I'm not even talking about reading comprehension. I'm saying that verbal ability and quants. These two things you definitely want to try with. These two things you definitely want to start with. Why? Because quants में और verbal ability में you will get lot of sitter questions. You will get questions like parajumble, you will get analogy, you will get close test, you will get synonym, you will get antonym. These kind of questions wherein you can mark them within a minute's time, right? So पहली चीज when you start with your exam, and
A lot of people are saying that okay, that has been tough. This exam has been, I think ये एग्जाम जब दिमाग में आती है कि भाई जैट का मतलब क्या, जैट इज इक्वल टू टफ, राइट? तो बहुत सारे बच्चे इसी प्रॉब्लम में चले जाते हैं. बहुत सारे बच्चे तो फॉर्म भरते भी नहीं है बिकॉज उनको लगता है कि यार जैट बहुत टफ एग्जाम है. तो यू हैव एन एडवांटेज बिकॉज नॉट मेनी पीपल आर गोना गो फॉर द एग्जाम. द कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी प्रीटी लेस. Even though there are people who have filled in the form just for the fact they know that after CAT, they literally got screwed up. Their motivation is into minus, right? They are not even able to, trust me, उनको पूछो भाई कल मने तेरा जैट को आने का, वो बंदा बोलेगा नहीं यार फॉर्म भरा है तो आना तो पड़ेगा अभी, राइट? एडमिट कार्ड तो आ ही चुका है. So trust me guys, the competition is going to be way below, way narrowed down. So you have a good chance. So stay motivated and kind of go for the exam with a positive attitude. So competition is going to be lesser. So what you have to do here is, basically, you don't have to tell yourself that exam is tough. Though the exam is a bit tough, but over a period of time from last 3 years, it has made some changes because अगर आप देखो कि the level of difficulty has gone down a bit, not drastically, but थोड़ा थोड़ा करके level of difficulty कम हो चुका है ZAT का. तो ये मत पकड़ के चलना कि पेपर टफ है, because the moment you feel that paper is tough, भले पेपर टफ नहीं होता, आपकी जो मेंटल सिचुएशन होती है वो पेपर को टफ बना देती है. This is the mentality of students यार. Even in my case, like, when we do all the assignments in IME and all that, it's easy, but we just feel that, it's tough and, we kind of, land up making it a little bit tougher. So guys, I think enough of gyan on that front. So it's not tough, it's just a little bit different than the other exams. तो पहला मैं पकड़ूंगा verbal ability या फिर मैं पकड़ूंगा quantitative ability. Quants में you will get sitter questions from arithmetic area, right? Arithmetic say you will get TSD, percentage, you'll get, ratio and proportion, profit and loss. These are all sitter questions. I want you to build up your mood. I want you to build up your mentality, your focus at the beginning of the exam. And that is the reason, the moment you are emotionally stable, the moment you are confident by marking all these sitter questions, then you are ready to jump on the tough guys. Then you can take on to the tough guys like decision making, data interpretation, reading comprehension. I want you guys to kind of divide your paper in 3 segments. So you're going to have segment 1, segment 2, and segment 3. Now, I'm also not going to tell you how many questions you need to attempt. Again, this is again the bullshit that I listen to. A lot of people tell you कि यार आप इतना क्वेश्चन करो, इतना क्वेश्चन करो. People will just write it, हाँ, how many questions you have in decision making? 21, 18 करो. How many questions you have in quants? 27, आप 18 करो. How the fuck you know, right? Because nobody has the ability to predict the paper. So I don't think anybody can tell you that these many questions you have to attempt. See, as far as the cutoffs are concerned, the cutoffs would range from 8 to 10 marks. As far as your ZAT is concerned, I'm talking about the sectional cutoff. You have to clear the sectional cutoff and you have to take care of the overall cutoff. So if your overall cutoff is met along with the sectional cutoff, you have a call from the good colleges. But there are some colleges like KJ, SPJs and all that, they will not be looking at your sectional cutoff. They'll be looking at your overall cutoff. Colleges like XAT and a couple of other colleges in the Xavier's category, they might check out your overall cutoff and the sectional cutoff. So if you look at the cutoff is going to be very less as far as that is concerned, 8 to 10 marks and you are done for it, right? So I'm not going to tell you how many questions you need to attend because I think that's not a good as a mentor. I leave that up to you guys. जितनी आपकी preparation है आप उतने questions करो. But हाँ, एक चीज याद रखना कि आपका sectional निकलना चाहिए. It's really important. So you're going to put that into 3 sections. Section 1, Section 2 and Section 3. Now, as far as your Section 1 is concerned, your Section 1 is always going to be score optimization. This is going to be your T20 game. जहाँ पे आप ज़्यादा score करोगे. Section 2 and Section 3, I'll come back to these guys later on. Now, what you need to understand, right, out of these 3 sections wherein you talk about decision making, quants, DI and the verbal ability and reading comprehension, guys, your one section has to be scoring section. So you have to kind of beat one section really hard. तो एक सेक्शन आपको पकड़ना है जहां पे आपका स्कोर ज्यादा होगा, जहां पे आपको स्कोर मैक्सिमाइज करना होगा, और बाकी की जो 2 सेक्शन आपके जो बचेंगे यहां पे आपको एक डिसेंट अमाउंट का एक आपको नंबर लाना है. सो हैव टू स्कोर डिसेंटली एज फार एज दिस 2 सेक्शंस आर कंसर्न. बट सर कुछ भी कर लो, एक सेक्शन तो आपका होना चाहिए जहां पे आपका स्कोर मैक्सिमाइजेशन का स्ट्रैटेजी होना ही चाहिए at any bloody cost, right? So section 1 में मैं क्या करूंगा, the moment I start my paper, what I'm gonna do is I'm gonna mark only those questions जहां पे मेरा जो अगर मैं टाइम की बात करूं तो मुझे टाइम थोड़ा कम लगेगा और मेरी एक्यूरेसी ज्यादा होगी. ये बेस्ट फंडा है, ये प्रूवन फंडा है हर एक एग्जाम का. जो भी बच्चा अप्लाई करता है स्कोर बढ़ जाता है. सो कम टाइम लगेगा और मुझे ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी, मेरे मार्क्स बढ़ेंगे. ये होगा आपका राउंड 1. अब आपके पास है 180 मिनट, राइट?
15 मिनट छोड़ दो, आपके पास है 165 मिनट, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। तो आप सोच सकते हो कि यार पहला वाला जो मेरा सेगमेंट होगा वो होगा पूरा का पूरा स्कैनिंग। तो पहले मैं स्कैनिंग पे ज्यादा फोकस करूंगा, पहले एक बार पेपर देख लूंगा, ठीक है। तो मुझे पता चला कि यार वर्बल में जितने भी सिटर क्वेश्चन थे कर लिए, क्वांट में जितने भी सिटर क्वेश्चन थे कर लिए, अब डिसीजन मेकिंग बचा और मेरा डीआई बचा। तो मुझे क्या करना है, वर्बल और क्वांट मैंने डन कर लिया। अब मुझे पता चलेगा कि मेरा अटेम्प्ट कितना हो चुका है, मेरी एक्यूरेसी कितनी है और मेरा स्कोर का रेंज क्या होना चाहिए। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन देन गो बैक टू डिसीजन मेकिंग, राइट। डिसीजन मेकिंग में इफ यू कैन गो, अगर आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा है, बिकॉज डिसीजन मेकिंग इज प्योरली एंड प्योरली कॉमन सेंस एंड लॉजिक स्टफ एंड एथिकल चीज, मतलब जो अच्छा है वो मार्क करो, राइट। उसके बाद डिसीजन मेकिंग को मैं थोड़ा बहुत देखूंगा, डीआई में थोड़ा एंड में रखूंगा। ट्रस्ट मी, डीआई इज गोना बी पेन इन एस, नो डाउट अबाउट इट। मैं जब भी डीआई देखता हूं जैट का, मेरे दिमाग में पहला सवाल ये आता है कि यार ये बनाया किसने होगा। ट्रस्ट मी, मतलब आई गेट सो फकिंग अट्रैक्ट टुवर्ड्स इट, लाइक इट्स सो फैसिनेटिंग कि यार कैसे बनाते हैं ये लोग ये सब सेट, बिकॉज इट्स गोना बी यूनिक, राइट। बट अगेन डीआई के बारे में मैं बात करूंगा, आई एम गोना स्टार्ट इट आउट हियर। तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा अपना यार देख लो, अगर आपको जमता है, मार्किंग हो रही है, करो, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं तो वो बना दो। अब तक आपको पता चलेगा कि यार आपका वो एक सेक्शन कौन सा है जहां पे आपको स्कोर मैक्सिमाइज करना है। फाइन, तो आप एक काम कर सकते हो, यू कैन टेक अ यू टर्न ऑन द स्पॉट, आप उस सेक्शन में चले जाओ, फटाफट से उस सेक्शन में जाके जो भी इजी चीज है थोड़ा ज्यादा टाइम दो, वहां पे स्कोर मैक्सिमाइज करो। जहां तक डीआई की बात है, डीआई आई विल नॉट से डीआई इज टफ, आई विल से डीआई इज ऑलवेज कैलकुलेटिव। डीआई जो बनता है जैट का, जैट इज नोन फॉर इज डीआई, होलोग्राम आता है, भलता सा कुछ डीआई आएगा, कभी केसलेट आएगा, बट हाँ कैलकुलेशन इंटेंसिव होता है। बट ट्रस्ट मी यार, ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर मैं डिसीजन मेकिंग की बात करूं, जहां पे बहुत लेंदी पैराग्राफ्स आते हैं, अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी है तो आप ये काइंड ऑफ नॉक ऑफ कर सकते हो। बट vis-a-vis I have decision, I have a data interpretation with me, तो मैं क्या करूंगा, I'll kind of go ahead with DI, भले थोड़ा टाइम चले जाए, ज्यादा 4 या 5 मिनट चले जाए एक क्वेश्चन पे, जो डीएम में भी जाएगा। बट डीएम में प्रॉब्लम क्या है, एक्यूरेसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पता नहीं कि मार्क करने के बाद भी सही होगा कि नहीं होगा, बट डीआई में ऐसा नहीं है। डीआई में अगर आप बात करोगे, डीआई के आपके जो भी 8 से 10 क्वेश्चन होंगे या फिर आपके 6 से 8 जो भी क्वेश्चन होंगे, राउंड अबाउट 30 से लेके 40% क्वेश्चंस आपके प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड होंगे। तो यार आपका टाइम वहां पे ज्यादा जाना चाहिए। भले आपका 4 से 5 मिनट वहां पे जा रहा है, आपका जो स्कोर है वो 100% श्योर शॉट है, बिकॉज आपको पता है एट द एंड ऑफ द डे ये क्वेश्चन का आंसर मेरा सही होने वाला है। सो गाइज, दैट इज नॉट ऑल अबाउट योर प्रिपरेशन, दैट इज ऑल अबाउट हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर मेंटालिटी, योर एंटायर एटीट्यूड एंड हाउ डू यू स्ट्रैटेजाइज इट। तो मेरे ख्याल से इफ आई वर यू, मैं डीआई पे थोड़ा फोकस देके डीआई को निपटा दूंगा जल्द से जल्द, बिकॉज मुझे पता चलेगा कि भाई इसके अलावा मुझे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनने वाले। सो आई एम डन ओवर देयर। Then I will try my level best to kind of optimize my score, and section 3rd, okay, rather section 2 will be वो क्वेश्चन जहां पे ज्यादा टाइम लगेगा, डीआई वाले डीएम वाले बने कर लिए। सेक्शन 3rd में मैं देखूंगा मेरी ओवरऑल अटेम्प्ट कितनी है और मैंने कितने क्वेश्चन छोड़े, बिकॉज 8 क्वेश्चन के बाद आपके जाने वाले हैं 0.10, सिग्निफिकेंट अमाउंट है ये। अगर मैं 30 क्वेश्चन भी पकड़ता हूं, अगर आपने 30 क्वेश्चन छोड़े हैं अनअटेम्प्टेड 8 के बाद, राइट, तो यार आपके कटेंगे 3 मार्क्स, और जैट में 3 मार्क्स भी बहुत बड़ी बात होती है, राइट। तो आपको थोड़ा इसको बहुत केयरफुल रहना है। तो 3rd सेक्शन में मैं खाली देखूंगा, हम खाली रेकी करेंगे कि यार ठीक है कितने क्वेश्चन छूटे हैं, राइट, कितने क्वेश्चंस मारे हैं, क्या सीन है, एंड दैट्स हाउ यू गोना बी लीडिंग योर पेपर। सो योर सेक्शन 1 स्कोर ऑप्टिमाइजेशन, सेक्शन 2 ज्यादा टाइम, एक्यूरेसी 100%, सेक्शन 3 भाई आपको चेक करना है कि कितना पेपर मैंने करा, कितना नहीं करा। एक बार कट ऑफ देख के चलना। कट ऑफ जहां तक बात है जैट के कॉलेजेस की, कट ऑफ्स आपके कम होते हैं गाइस, बट ट्रस्ट मी द ओनली लास्ट थिंग, a piece of advice from my side is that it is not about how much you have prepared as far as ZAT is concerned. It's all about how do you utilize those 3 hours or those round about 165 minutes on the D day. अगर D day पे आपने स्ट्रैटेजी पकड़ ली, अगर D day पे आपने थोड़ा बहुत पेशेंस रख के अच्छे से आपका पेपर अटेम्प्ट कर लिया, you are in, because XLRI के बाद बहुत सारे कॉलेज है, there are round about, अगर 150 कॉलेजेस में अगर मैं बोलूं आपको अंडर ZAT, I can definitely say around about 80% of the colleges are looking for close to 80 to 90% का cutoff. So guys, you have to be very smart. You got to be very suave as far as that is concerned. If you have any questions, you can put the comment on the video or you can get in touch with me. I wish you all the very best for your ZAT. Tomorrow is your paper. आज chill मारो, थोड़ा सा practice करो, revision करो, ज्यादा load मत लेना। जो चीजें वीडियोस में बोली है यार थोड़ा practice करो। I think then you are very well prepared for your ZAT. Guys, I wish you all the very best. भाई फोड़ के आना, ठीक है? Thank you so much.